want to know what is the feeling. It's coming to my... You feel what? I feel emotional. I feel. This is the invitation of Allah from Allah. Yeah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. There's a lot of things that Allah give to me. That's why it's, for me, it's really, it's not enough. I'm not ready. I want to give more. Yeah. When you are thinking that in front of Allah, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, हिदायत का जब अल्लाह की तरफ से हुक्म मिलता है तो कोई न कोई बहाना जरूर बन जाता है। हमारे एक मुसलमान भाई ने अदावतुल इस्लामी कैंप लगाया था। एक औरत सिर्फ कैंप का तमाशा करने अंदर आई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई तो टीम के बंदों ने ऐसे महज़्ज़ब अंदाज से पूछा कि क्या आप हिजाब पहनने का तजुर्बा करना चाहती हो? तो इस बहन ने इंतहाई अजीब अंदाज में जवाब दिया और कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं करना चाहती हूँ। हिजाब में ऐसे क्या तासुर पाया कि इस बहन ने फौरन ईमान लाने के लिए आमादा हो गई। आइए आखिर तक ये ईमान अफरोज मनाजिर देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। what happened last night? That is the best ever Shahada that I ever. The one lady approached in the tent, in Qatar guest tent. Oh, it's only look at the tent, looking for the instruction of the tent. And then they approach him and they ask, you want to experience the hijab? It's really amazing. Really? There's something like that? Yeah. Go. And then when they put the hijab, the tears coming out. I don't want to know what is the feeling. It's coming to my... You feel what? I feel emotional. I feel. This is the invitation of Allah from Allah. Yeah. I will talk to you, inshallah. You want to make Shahada? Yeah, really, because before, a long time ago, I want really to go and I want to be a Muslim. Okay, I will explain it to you after you take a picture, because that is before the intention. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. But she spent more time because she want to talk a lot of things about Islam. Yeah, you feel that she really sincere what she did. I feel Islam. You feel respect. I respect. Yeah. That's good. This is the dress of Mama Mary. I see myself. Why do you do what you do? When I hear that question, I always answer, if I'm not doing this, what will I, what my situation in the graveyard? If I'm not doing dawah, I don't know, I'm still feel that it's not enough what I did now. How about the Muslim staying only in the house, or doing a Muslim only focusing in games, focusing in giving a big house? How about the hereafter? There's a lot of Muslim, they focusing for this dunya. Why? This is the time. This is opportunity to all the Muslim to do something, because we don't know where is the last breath. There's a lot of things that Allah give to me. That's why it's, for me, it's really, it's not enough. I'm not ready. I want to give more. Yeah. When you are thinking that in front of Allah, if I did, it's enough
what I did, I think it's not enough for me because माशाअल्लाह, जब दिल में आखिरत का यकीन पुख्ता हो जाए तो इस दुनिया का आपके लिए धोखा के सिवा कोई हैसियत नहीं रहेगा। ये बंदा नौ मुस्लिम है, 10 साल पहले ईमान लाए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दावत इस्लाम के लिए वक़्फ की है। इनके हाथों पर बेशुमार गैर मुस्लिम ईमान लाए, लेकिन अब भी ये बंदा रो रहा है कि कैसे अल्लाह के सामने पेश होंगे। हम अपने बारे में सोचे कि हमने आखिरत के लिए किया क्या है, बस इससे हमें सबक लेना चाहिए और आखिरत के लिए तैयारियां शुरू करनी चाहिए। हमारा साथ देने के लिए इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।